start class, I mean, you should put in the mute mode. I mean, all of you, all students should put in the mute mode. Okay, so then no chaos will come. So I welcome all of you to this third class MRD 103. Today is the MRD 103 first class. Okay, before that you were done MRD 101 and MRD 102. So today's counselor, he is a Dr. Dilip Kumar Mishra. He is from economist and is a very veteran counselor. He's the old counselor. So you are very fortunate sitting in the different part of the Odisha. So through this Google Meet, you are connected to each other. So it's a new kind of, I mean, innovative kind of things. Might be you have not experienced on that. I mean, all the times your face-to-face interaction or counseling class is going on. So now you have started due to this pandemic. It's a blessing on disguise. You have started online counseling session. So I don't know how much it is effective for you. So end of the presentation, you can interact with that, how it is benefited to you. This counseling session is really benefited to you or not. So I mean, the Dilip sir, he will take the MRD 103. Today he is going to present the first block. So whatever after the presentation, your clarification, your doubt, and what you want to know, and what is presented to you, how much you understood to the presentation, and what better is is required to develop. So everything is up to you, dear learners. Try to interact after the sir's presentation over. So now over to Dilip sir. Sir, now sir, you start your presentation, sir. Sir, Okay, 1 minute. 1 minute, sir. Sir, in the mid session, in between the teaching process, any student can ask any question. No, sir. You don't do that, because then it will be a chaos. You complete your presentation, then they will start putting the question. You start your presentation, sir. Sir, thank you, sir. Thank you very much. Good afternoon to my dear students. Welcome you all to MRT 103 session. In all the previous years, you all attended the different classes in direct classes. But in this year, you are attending online classes due to the greater problem of Odisha. Not only Odisha, but also in the world. That is Corona problem. So, though this is a problem, so we are starting, IGNOU is starting online classes. So thanks to IGNOU for trying to start this type of classes. So IGNOU arranged the online classes for the students' betterment, good performance, and success in the examination. So I am on behalf of the students also giving a lot of thanks to IGNOU authorities by arranging such type of class. And also I am grateful to IGNOU authorities because they are assigning me a class. So I will start the MRD 103 session. Students, are you audible to me? Students, my dear. Yes, sir. Yes, sir. Are you audible to me? Yes, sir. Yes, it is audible, sir. Are you audible to me? Yes, sir. Yes. Okay, thanks. So I, on behalf of the students, a lot of thanks to Panigai sir and also all other IGNOU authorities by arranging such a class and assigning me a class. So I will start today the MRD 103 class. So MRD 103. So the second topic is planning. So today I am allotted 5 chapters. Planning is the second unit. So today I will start planning. Students, do you know planning? So what is a plan? So plan means pre-strategy. What is that pre-strategy? So before doing a work, in which process we will do the work, that is known as planning. So planning is a panacea. Planning is a panacea. Panacea means a medicine which cures all the diseases. So planning is a panacea which cure all economic diseases. So which cures all economic ills. That means what are the economic problems in front of us? These are cured by plans. That means proper planning. By adopting proper plans, we can solve almost all our economic problems. So on the financial point of view, why planning is required for a country? So we know that in the world, there are different types of countries. So generally, on financial point of view,
the entire world is divided into two categories. One is developed country and another is underdeveloped country or developing country. One is developed country and the second one is underdeveloped country, or which nowadays we can say developing country. So what is a developed country? What is a developed country? So developed country is a country, the country which is able to provide the basic amenities of life to its citizens is known as developed country. Okay? Okay, students? So what is a developed country? Can I use Odia? My dear students, can I Yes, sir. use Odia? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Sometimes Okay, Odia okay. also we Thank you, thank you. Thank you. I am using English and where necessary I will use Odia. Are you comfortable in English and Odia, both of the two languages? Yes, yes, sir. Yes, Comfortable in sir. Odia and English? Yes, Yes, okay. sir. Can I use Odia? Yeah, yeah. Yes, sir. Listen, I'm a Sadharata, so generally the entire world is divided into two categories. One is developed country, another is underdeveloped country. What is Urnata Arthanitra Rashtra, out of Anurnata Arthanitra Rashtra. So what is a developed country? So developed country is a country where the basic needs of life. Basic needs of life means खाद्य, वस्त्र, बासगृह. ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାର ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ ଯୋଗାଇ ଦେବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ଡେଭଲପ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବା ଉନ୍ନତ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ. The country which is able to provide the basic amenities of life to its citizens is known as developed country. For example, America, Japan, German, Canada, Switzerland, France, these are the developed countries. এই country গুড়াକୁ developed country ବୋଲି କହୁଛେ. These countries are able to provide the basic amenities. That means the basic needs: food, clothes, shelter. ଖାଦ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବାସଗୃହ এই ତିନିଟା ମନୁଷ୍ୟର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା. এই ତିନିଟା ଆବଶ୍ୟକତା ଯୋଉ କଣ୍ଟ୍ରି ତାର ଯୋଉ ରାଷ୍ଟ୍ର ତାର ନାଗରିକ ମାନଙ୍କୁ ଦବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇଛି ସେ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଆମେ ଉନ୍ନତ ଅର୍ଥନୈତିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହିଥାଉ. America, how far the America will be a developed country I don't know, because due to corona problem. अरे ବର୍ତ୍ତମାନ corona problem ଯୋଉ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଲୋକ ମଲେଣି ଆମେରିକାରେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଭଲପ କଣ୍ଟ୍ରି ରହିବ ତାର ଇକୋନୋମିଟା କ'ଣ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ଡାଉଟ୍. ତେଣୁ ସେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଆମେରିକା ଇଜ ନାଓ ରିଚେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ. ତେଣୁ ଗୁଡ଼େ ରହିଲା ଡେଭଲପ କଣ୍ଟ୍ରି. ଅଣ୍ଡର ଡେଭଲପ କଣ୍ଟ୍ରି କୋଉଟା ରହିଲା? ଅନୁନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର. ଅନୁନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର କ'ଣ ରହିଲା? ଜଷ୍ଟ ରିଭର୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଡେଭଲପଡ କଣ୍ଟ୍ରି. ଦି କଣ୍ଟ୍ରି which is unable to provide. ସେପଟେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? which is able to provide. Here which is unable to provide. The country which is unable to provide the basic amenities of life. ବଞ୍ଚିବାର ସର୍ବନିମ୍ନ ମୌଳିକ ଆବଶ୍ୟକତା ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ତାଙ୍କୁ ଅନୁନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ଆମେ କହିଥାଉ. ତେଣୁ ଅନୁନ୍ନତ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭିତରେ କୋଉ କୋଉମାନେ ଆସିବେ? ଇଣ୍ଡିଆ, ପାକିସ୍ତାନ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, these are the underdeveloped country. So poverty, unemployment and inequality are acute in these countries. Poverty is at high stage. Poverty is at high stage. Massive unemployment occurs in these countries. Inequality prevails in these countries. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ରହିଲା, this leads to starvation death. Do you know starvation death? ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ. ତେଣୁ ଏଇ କାରଣରୁ ଯୋଉ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି. So country, the countries which are underdeveloped country, they need proper plans. Before so many years, developed countries adopted their plans, so they are developed. So planning is required for our country for its economic development. ତେଣୁ ପ୍ଲାନିଂ ଆମର ଇକୋନୋମିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର. ତେଣୁ ପ୍ଲାନିଂ କ'ଣ ହେଉଛି? So what is planning? Planning is a panacea. Panacea means a medicine which cure all the diseases. ଗୋଟିଏ ଔଷଧ ଯିଏକି ସବୁ ରୋଗକୁ ଭଲ କରିଦିଏ. ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ? ତେଣୁ ସେମିତି ଇକୋନୋମିକ୍ସର ସବୁ ରୋଗ, ଅର୍ଥନୀତିରେ ଯେତେ ରୋଗ ଅଛି, ଇକୋନୋମିକ୍ସ ରୋଗ କ'ଣ ଆସିଲା? ପଭର୍ଟି, ଅନଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, inequality, natural calamities which destroys the country's property. ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ economic inequality, economic hurdles. These are the economic problems of the country. So when these are the economic problems of the country, so planning will
destroy all the big economic problems of the country. तो planning सब जगह problem देखो नष्ट करती है. Understand? अरे बुझे होचे? ମୁଁ ତମକୁ ପଢେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ WhatsApp ରେ जो WhatsApp ଟା ଅଛି ସେ WhatsApp ରେ पॉइंट लिखि सब छाड़ देतो. ओके? तो तापर से कहूँ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ବୁଝିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ପଢେଇ ସାରିଲା ପରେ WhatsApp ରେ ସବୁ ଯାକ पॉइंट ଏ କରିକି जो ग्रुप ଟା ଅଛି ସେ ग्रुप ରେ ଛାଡି ଦେବି. तो प्लानिंग तो ये विषय में कौन पढ़ा what will covered in this planning. Do you know planning? So planning is a pre-strategy. Planning is a medicine. Planning which solves all the economic problems. So what are the units? What are the topics we will discuss in this planning? So we will discuss objectives of planning, introduction of planning, process of planning, plan schemes, message of planning at the national level and message of planning at the state level. Then what are we discuss? Sums of the discussion. Then keywords and suggestion of readings. So this we will cover in this chapter 2. So number 1, objectives of planning. So what are the objectives of planning? So we know that planning is required to attain the economic development. Planning is required to solve the poverty problems. So we know that students, do you know India is a underdeveloped country? So underdeveloped country, that means most of the people of India are residing under poverty line. This is because of lack of planning. Proper planning are not adopted in our country. So we will discuss now the objectives of planning. So what are the objectives of planning? Planning काहे की दरकार? कौन पे planning हमको दरकार? कौन पहले planning टा हमें करिया काहे की planning करछो? So we require planning. We require planning. So why we require planning? So planning is required for some causes. Number 1, the features of planning. The objectives of planning are attainment of higher rate of economic growth. So planning is required attainment of higher rate of economic growth. So what is economic growth and economic development? So economic growth means the growth process of the developed countries is known as economic growth. जो राष्ट्र गुड़िक ऑलरेडी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव कर जाइछन्ती, फर्दर डेवलपमेंट इज नोन एज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द कंट्रीज व्हिच आर नॉट अटेंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कंट्री गुड़ा इकोनॉमिक डेवलपमेंट अटेंड करि नाहंती तार डेवलपमेंट को जाय इकोनॉमिक डेवलपमेंट. सो इंडिया इज गोइंग टू बी डेवलप्ड. दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दैट इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री. डेवलपिंग काई कहउछे? डेवलप उन्नत पथरे आगे चलछे. Poverty. So poverty occurs in Indian economy. Why poverty occurs in Indian economy? आमे कहले कोन? Due to lack of planning. आउटे मजा कथा कहउछि सुना. Lack of planning आमे कहले किंतु but Indian people are interested to be poor. Yes or no? हां ना नहीं? मते कह भारत गरीब होबा को इच्छा करछथि. Yes or no? Students? Yes, sir. भारत गरीब होबा इच्छा करछथि. People of India are interested to be poor. Yes or no? sir how sir Yes, sir. Yes, I will explain. But tell me, yes or no? yes sir Yes sir. Why you say yes? मु कहल बोली कहले कि भारत लोग काहे गरीब होबा इच्छा करछथि. तार गप कहतो. आम देशर लोक माने इन आवर कंट्री द पीपल आर इंटरेस्टेड टू बी पुअर. आमे गोटे इग्नो रे पाठ पढुछे. वी आर रीडिंग इन इग्नो. सो इग्नो इज गिविंग अस एन आइडेंटिटी कार्ड. आइडेंटिटी कार्ड उठ देछि इग्नो हमको. हम पके बोले आमे इग्नो रो स्टूडेंट बोली. सेमिति रेशन कार्ड होल्डर. रेशन कार्ड होल्डर, those who are residing below the poverty line, they should get the ration card. But people who have buildings, motor cars, two-wheelers, motorcycles, they are interested to get a ration card. But ration card टा जोगाड़ कर लोग चाहते. ration card टेले लोग कौन करिवे? सेटा नहीं कि माहालिया चावल, माहालिया किरोसिन, माहालिया तेल, तेणु प्लस किसी टंका माहालिया पाइबे. तेणु एथिपई सर कौन कहउछथि गोटे रेशन कार्ड पाया पे दे आर गिविंग ब्राइब. यस और नो? समाने ब्राइब दोछथि, लांच दोछथि. तो लांच दर्शन कोन करछथि? लांच दा फळे रेशन कार्ड पाउथि. कि गोटे जिंस होछि द पीपल वेयर
they are interested to be poor. So how the economic development will occur? So for economic development, we have to make a proper plan to attain the higher rate of economic growth. Higher rate of economic growth. Economic growth by planning. This is the number one objective of the planning, that is attainment of higher rate of economic growth. Number two, reduction of economic inequalities. Inequality. What is inequality? Inequality means not equalization among different people of the country. Some are earning crores of rupees, some are earning less rupees. किछि लोक अधिक टका रोजगार करछथि, किछि लोक कम टका रोजगार करछथि. So inequality जोटा को हमें कहउछे inequality असमता बोले हमें कहउछे. तेणु inequality. So proper plan inequality will abolish. Planning will that concept, by adopting planning, inequality can abolish from the country. That means prevalence of equality and social justice in the country. Understand, my dear students? Understand? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes or no? Yes, Yes. 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 Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay, sir. Proceed to Equality- next. Yes. Reduction of economic inequality. Achieving full employment. So what is employment? The person who will earn for himself. That means the person who is engaged in different productive activities is known as employment. So in India nowadays, according to 2011 census, 39.2% people are unemployed in the country. That means near about 60%. So 60% people are employed, 39% people are unemployed. So when such a vast number of people are unemployed in the country, so definitely unemployed persons are depending upon others. The person who is unemployed, he depends on others for his food, for his clothes, and for his shelter. So unemployment, that means we are sufficient enough to do any work. आमे कार्यदक्ष कार्यक्रम करिपारिबा हमकु किंतु प्रॉपर कार्य करिया पे सुजोग मिलुनी. जदि हमकु काम करिया सुजोग न मिलियो ताले अनएम्प्लॉयमेंट, वी आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स. सो व्हेन वी आर कंज्यूमिंग बट नॉट प्रोड्यूसिंग, हमें कंजम्पशन कर चलचे किंतु प्रोडक्शन हे पाबनी. यदि कंजम्पशन करिया प्रोडक्शन न परिबो ताले कोन हो, ताले कंट्री विल बी अंडर डेवलप्ड. सो प्लानिंग इज दैट कांसेप्ट which provides employment opportunity to the growing population of the country, to the largest population of the country. So we know that India is a populated, exploded country. That means population explosion occurs in India. जनसंख्यार द्रुतगति जनसंख्या बढ़िया जो भारत गोटे अनुन्नत राष्ट्र. तेणु प्रॉपर प्लान कले we can provide employment to every sectors in every person of the country. In government sector, in private sector, in trade sector, in commerce sector, in economic sector, in foreign trade sector, in export business, and in import business. We can provide employment opportunity to the growing population. So planning provides us full employment. Then modernizing various social, agricultural, industrial policies. Modernizing agriculture and industry. We know that India is a country where most of the people are depending on agriculture. According to 2017 decision, 52.8% people are depending on agriculture, but agricultural production is just 27% of the national income. हमें देखिए जदि भारत रे 52.8 52.8% लोक कृषि पर निर्भर करछथि, किंतु 27% नेशनल इनकम प्रोडक्शन एग्रीकल्चर होछि. Only 27% production occur from agriculture sector. So such a vast number of people are depending upon agriculture, but less production comes from agriculture sector. So India is an underdeveloped country. So proper plans should be adopted. So planning is required to attain more from agriculture sector. And for industrial development, planning is also required. Industrial development, how industries will be developed in the country. So planning is required. So planning also makes balance between different sectors. Different sector re planning da balance है.
केमती balance आनिबो suppose export and import sector. Export means when we produce the commodity and send it to other countries of the world. Import means when our required commodity we bring from other countries. आमे जते बेले उत्पादन करी अन्य देश को पठाऊ सेटा को जाय एक्सपोर्ट एवं अन्य देश रो आमे दे आणु एटा को जाय import. So if we analyze India's position, then we will see that India imports more commodity instead of exports. आमे बहुत commodity import करूचे export करबा अपेक्षा हमर export कम commodity होची import अधिक commodity होची तेणु proper planning will increase the productive activities and production of the country and people are attaining economic development, country will attain economic development. So these are the objectives of planning. What are the objectives? Attaining higher rate of economic growth. Number 2, reduction of economic inequality. Number 3, achieving full employment. Then attainment economic self-reliance. Self-reliance means निजे निज ऊपर निर्भरशील, not depending upon others. का अन्य ऊपर निर्भर न करिकी निजे निज ऊपर निर्भरशील होबाको कुहाଯାଏ self dependence. So when the proper plans will be adopted in the country, India will produce more commodities. When proper plans will be adopted and India will produce more commodity, then India will be a self-dependent country and India will not depend on other countries. हमारा वर्तमान अन्य कंट्री पर जो निर्भरशील होचे से अन्य कंट्री पर निर्भरशील हबा नहीं, निजे निजरा समस्त उत्पादन कर परिबो. Modernization of various sectors and removing imbalance, these are the planning of the objectives of planning in a country. एगुडा होचे planning रा objective. Understand my dear students? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. Yes. Yes, sir. Okay. Then planning. So when the plan started in भारत वर्ष प्लान टा केबे हेला? Can I slowly progress? Can I speed? अरे प्लान वो कोई बात अधिक स्पीड है जाउची की? हाँ सर ठीक अछि सर. ठीक है ता? ओके. आगे. जदी स्पीड है जो सुनो जदी स्पीड है जो रथ जदी स्पीड रे गडला ब्रेक मरा हुए. बुझियो तो? अरे you might have seen the Rath Yatra car festival. अरे समस्त रथ यात्रा देखिथिबो? आगे सर देखिछु. Yes, sir. रथ यात्रा रथ गजले जोर गडी जाउची ए पडो गडी जाउची कोन करो ओडे काठरा ओडे ब्रेक दिया यस वेरी गुड सेमिति इफ माय स्पीड विल इंक्रीज तो ओडे काठरा ब्रेक मारतो तो साथ स्पीड है लोड न बुझ परियो ओके so a planning दा केला आरंभ so India got our independence on 15th August 1947 भारत So when India got our independence, at that time there were no planning at all in India. भारत वर्ष रे स्वाधीनता रे भारत रे कोन से प्लानिंग नथिला फले कोन है प्लानिंग नथिला फले से कोन हला India was completely an underdeveloped country. So Indian government felt that without adoption of proper plan India will not develop. तेणु भारत सरकार फील कले प्लान जदि न तयारी हबो प्लानिंग हबो नहीं ताले भारत वर्ष रो उन्नति परिबा नहीं. तेणु प्रथम प्लान हमरा तयार हो योजना तेणु केबे प्रथम प्लान तयार हला योजना केबे 1st April 1951 प्रथम अप्रैल 1st April 1951 1951 मसिया अप्रैल 1 रे भारत वर्ष रा प्रथम प्लान ता तयार हला. तेणु प्रथम प्लान जो तयार हला कोन हला सो द प्लान consists of 5 years. भारत वर्ष रे गोटे गोटे प्लान 5 वर्ष रा अवधि पे हला. That means the plan which conceived in India has 5-year term, 5 वर्ष term. 1st April 1951. So the plan consists of 1st April 1956. 1956 वर्ष पे प्रथम 5 वर्ष योजना तयार हला. तेणु ए बलिया गोटे गोटे प्लान रा अवधि 5 वर्ष किंतु जोटी प्लान टा हे न पारला सेट्स माने कोन कले एनुअल प्लान कोन कले जे 1966 67 68 ए थोड़ा एनुअल प्लान हला. धर फर्स्ट प्लान हला केबे 1951, सेकंड प्लान 1956, थर्ड प्लान 1961, फोर्थ प्लान 1966 किंतु ता परे 3 वर्ष प्लान हे पारला.
67, 68, 69 तीनटा प्लान हे पाले नहीं तो ये तीन वर्ष एनुअल प्लान तैयार हैला ए जो एनुअल प्लान तैयार हैला ए एनुअल प्लान में वर्ष को प्लान टी हैला एवं प्लान टी करके से ताको पुणे आउथरे आर वर्ष आ गोटे प्लान कले दीज आर दी नोन एज एनुअल प्लान तो प्लानिंग पे से कोन कला गोटे प्लानिंग कमिशन गठन हैला Indian government made a commission that is known as Planning Commission. The Planning Commission implemented or worked in India from 1950 March. 1950 मसीहा मार्च मासरू प्लानिंग कमिशन भारत वर्ष रे तैयारी है ए जो प्लानिंग कमिशन तैयारी हला प्लानिंग कमिशन ने 8 मेंबर्स आर इन प्लानिंग कमिशन ए प्लानिंग कमिशन ने 8टा मेंबर रहले के नंबर 1 प्राइम मिनिस्टर हु इज द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमिशन नंबर 2 4 permanent members 4 full time members 4 जन full time member रहले including the deputy chairman then minister of planning minister of finance minister of defense 8 persons जन रहले chairman prime minister is the chairman of planning commission आउ 4 जन member रहले तनो से एक ये 4 एक तला 5 जन रहले तो 5 तो ये जो 4 जन among these 4 one person will be considered as deputy chairman जन को deputy chairman बोले कराजिबो तापर आउ 3 जन member रहले के जे minister of planning minister of finance and minister of defense planning finance और defense तीनटा minister बाकी deputy commission deputy chairman और तीनटा member prime minister these 8 members consist of planning commission all the plans implemented in India and published in India is decided by this planning commission ए प्लानिंग कमिशन निष्पत्ति नवर्तता चेंज कर देके कर नीति आयोग ए नीति आयोग आड़ को जाउनी कारण नीति आयोग हमर इतरे देनी कि मन रखता ए प्लानिंग कमिशन चेंज करी बर्तन कर चेंज माने नीति आयोग तो फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमिशन ए जो प्लानिंग कमिशन तैयारी हला सो व्हाट आर द फंक्शंस फॉर व्हाट पर्पस को उद्देश्य को लक्ष्य रखी ए प्लानिंग कमिशन तैयारी हला नंबर 1 मेकिंग रियल असेसमेंट ऑफ वेरियस रिसोर्सेस इंक्लूडिंग into the possibility of augments of resources number 1 कौन कारण को काई प्लानिंग कमिशन तैयार हला the first function making real assessment of various resources so we know that India is full of natural resources but scarce in its utilization भारत प्राकृतिक संपद रे भरपूर राष्ट्र हेले मध्य प्राकृतिक संपदर सुविनियोगर अभाव फल रे भारत गोटे अनुन्नत राष्ट्र So the first function of the planning commission is to assess the resources of the country and how to utilize the resources up to the betterment of the resources and produces more from these resources. That is utilization of resources. That is second को प्रथम पॉइंट हला resource टा को केमिति utilize करबा how we utilize the resources in the country. Number 2 formulating a plan after deciding how to utilize then formulate a plan कोन करबा हमें धर पाठ पढुछे some of you might have been service holders distance course माने करूछथि सर्विस होल्डर कि जाछथि तणो सेठी कोन होछि सेमानको सुविधा दिया जायछि ए जो सुविधा दिया जायछि माने कोन मो सर्विस करिछि एपटे मो पाठ पढुछि तणो how to manage how to implement both of these how to perfectly I will do my service and how I will pass keeping good percentage in IGNOU IGNOU रे किंतु अधिया मार रखबी किमिति मो भलो करी दीटा आदमी करूचे प्रॉपर प्लान सेमिति प्लानिंग कमिशन रो काम होची फंक्शन ऑफ प्लानिंग कमिशन इज फॉर्मुलेटिंग ए प्लान what a plan taku formulating a suitable plan or formulating a suitable policy the number 3 defining stage of plan implementation so after formulating the plans how to implement the plan टा केमिति कार्यक्षम करे plan टा खाली प्लान कर देला बनी गोटे आउट एग्जांपल दोछि सपोज गोटे सब्जेक्ट रे मुटे वीक अछि मु कहबी नै मु आज राति जाग पाठ पढी आज राति जाग पढी के भलो से सब्जेक्ट को थोरली पढी देबी किंतु राति हे गेले खाई देबी आफ्टर कंज्यूमिंग आई विल स्लीप बुझियो छ त राति रे खाई सारी सोई पड़ले कोन हो सोई पड़ले मो पाठा पढ़ी परबिनी so not proper implementation of the my ideas my plans similarly the duty the function of the planning commission is to
is to formulating the plan or implementation of the plan in proper manner. But a proper manner plan to implement करे सेमानका कर्तव्य रहउची. Then identifying the factor retarding economic growth. Identifying the factor which retarded economic growth. Retarded economic growth माने से कौन कहउची? Retarded economic growth माने economic growth रे obstacle to economic growth. So it is the duty and responsibility of the planning commission. What are the retarding factor of economic growth? Economic growth पे को factor उड़ा का obstacle ताकू बाची की से factor उड़ा को नहीं की हमें अधिका develop करवा दरकार पड़ती. So that is the work of planning commission. Then determining plan machinery. Plan machinery. So planning करने पे कौन machinery? What are the machineries? What are the ways which will function for a proper plan? तो proper plan पे कोटा function करियो. तो इस हमरा दरकार पड़छ. Then achievement of a target. मु आज राति रे ए यूनिट टा सारीबी. This is a target. So for that I have to do a proper plan. तो सेति पे मते ओटे proper plan करिवा दरकार पड़छ. जदि सेति पे मते ओटे proper plan करिया दरकार पड़छि ताले planning commission रे कोन काम? Planning commission रे काम होला. So the work of planning commission is achieving the target. That means what are the targets to produce, what are the targets to cultivate, what are the targets for the industrial purpose. I have to achieve the target. Then planning commission काम होला target टाको achieve करिया. So these are the basic objective of planning commission. तो से कौन कहउची planning commission objective होला परे तापर से कहउची how many plans are implemented in our country. वर्तमान हम कंट्री रो केतटा प्लान हेछि आज पर्यंत 12 टा प्लान हे सारछि. 12th five-year plan already completed in 2017. तो से कौन कहउची first five-year plan implemented in 1st April 1951. So the plan was implemented in the country to provide minimum needs program MNP minimum needs program. Minimum needs program, that means what are the basic needs. In the beginning stage I was discussing regarding basic needs. मु basic need विषय कहउतली खाद्य वस्त्र वासगृह. Then first five-year plan डाला कोन. So when India got her independence, in India there were no industries, agriculture was completely underdeveloped and production was completely low, population was exposed to the country and people were facing starvation death. तो लोक माने अनाहार मृत्यु फेस करथले. तेणु से कोन करथले तो से 5-year plan implement हला to provide MNP minimum needs program. सर्व अति कम रे गोटे लोकर बंचिया पई जा दरकार. What are the minimum needs of a person? So minimum needs program. So minimum needs program, to fulfill the minimum needs program, this plan implemented in our country. So second five-year plan, first five-year plan, importance was given on agriculture. That means India on agricultural country, how to agricultural development occurs in our country, the basic importance was given on that. भारत गोटे कृषि भित्तिक राष्ट्र हेतु कृषि क्षेत्र रो किपर भाव रे अधिक उत्पादन करा जाय परिबो से विषय से कृषि रो अधिक उत्पादन करिया पय योजना कले. तेनो सेकंड फाइव-year plan ने कोन हला. So if more people will depend on agriculture, then unemployment was massive in the country. So second five-year plan importance was given on industrialization, silpa or nothing. So now, so we know that in India less number of industries. आमे गोटे कथारे कहू जे ब्रिटिशर माने जो इंडस्ट्री भारत वर्ष करथिले सने गलाल को से इंडस्ट्री का भांगी देई पड़ले बा नष्ट कर देई पड़ले. इंडिया रो जोटा निजस्व इंडस्ट्री थिला हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, इंडिया वाज कंप्लीटली डेवलप्ड बाय हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. हैंडीक्राफ्ट माने हस्तशिल्प. आमर धर खोर्धा गामुछा, सोनपुर रो पाट साड़ी ए सब विभिन्न जगह रे यूज होची. तो सेगुडा बहुत डेवलप कर जायतला, सेगुडा को नष्ट कर देथिले. तेनो हमरा प्लान करला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट. तेनो इज फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लान हला 61 to 66. से दीटा करे हाउ मिक्स्ड इकोनॉमी इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर बोथ किमती डेवलप करियो सेटा ऊपर गुरुत्व आरोप करला. हाउ both will develop in a country, agriculture and industry, how both will develop. Then 1966 third plan completed.
and no 5-year plan 5 वर्ष योजना किछि हेई पाला तो सेठी कोन करा गला सेठी करा गला कोन annual plan that means वर्ष का पे योजना understand students hello 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 Yes, sir. understand अरे बुझी होची Yes, बुझी sir. होची बुझियो ठीक अछि तेणु 66 मसिया कोन हला आ तीनटा 5 वर्ष योजना हेगला 51 रु 56 56 रु 61 61 रु 66 so when 3 5-year plans has been completed in India after completing 3 5-year plans आ 5-year plan हे पाला तो से का कहले गोटे वर्ष योजना कहले 66 आ गोटे वर्ष योजना कहले 67 रे आ गोटे वर्ष योजना कहले 68 रे तो तीनटा योजना कहले ए जो तीनटा योजना कहले 1 year plan एटा कोन कहै छै annual plan understand okay Yes, sir. annual plan then 1969 69 रे fourth 5-year plan हला then fourth 5-year plan ला 69 ରୁ 74 तार fifth 5-year plan हला 74 ରୁ 79 so the fifth 5-year plan adopted in the country 74 to 79 and the sixth 5-year plan 1980 to 85 ए सब जाक 5-year plan रे कोन कराला so the target was how to achieve 9.0% GDP to 9.5% GDP. GDP means GDP माने जानछ पला माने GDP माने जानछ gross domestic product. gross domestic product माने कोन से देशर भौगोलिक सीमा सरदा भितरे जहा जहा उत्पादन हला ताकू वजे gross domestic product मोट घर हो जाय this is part of the national income so the gross domestic product target was achieved so target was fixed to achieve 9.2 9.5% GDP 9.5% GDP हम पाया पे योजना करले बुझियो छी ए सब जा प्लान किंतु our achievement level was very low due to improper adoption of planning टाकू ठीक रूप रे हमें अडॉप्ट न करि परिबा जोगु हमर जीडीपी टा डेवलप करि पाला जीडीपी माने कोन gross domestic product that means the people the citizens of the country and also the foreigners who are residing within the geographical boundary of the nation and how much production commenced among those people is our GDP ए सब लोक द्वारा जा उत्पादन हला एटा हम कहू छे जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तेनो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ता 9 रु 9.5% हमें प्रोडक्शन करिया को भाबुतिले किंतु सत्य की हेई पारला नहीं प्रोडक्शन ता कमी गला बुझो छी तेनो कमी जा फळे 1990 रु 95 8th 5-year plan अडॉप्ट हला 8th 5-year plan कोन करा गला मेन इंप्लीमेंटेशन वाज रिसोर्स मोबिलाइजेशन बुझो छी 8th 5-year plan ने रिसोर्स मोबिलाइजेशन हमरो रिसोर्स टा केमिति मोबिलाइज केबा हाउ टू यूज आवर रिसोर्सेस मैले कहउतले भारत प्राकृतिक संपद रे भरपूर होइछ राष्ट्र हले मध्य भारत वर्ष रे उत्पादन हार अत्यंत नगण्य बा नेचुरल रिसोर्स रा प्रॉपर अनयूटिलाइजेशन of natural resources the country is not developed तेनु हमरो 7th 8th plan ने कोन कराला how to increase production सेत में प्लानिंग करागला कोन प्लानिंग करागला से 7th plan और 8th plan रखाला कोन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आत्मनियुक्ति निजे so in which way the population of the country is increasing neither any government sector nor any private sector nor any trade sector nor any commerce sector nor any foreign sector nor any domestic sector nor any economic sector will able to provide employment opportunity to the growing population बुझौ छी जो हार रे जनसंख्या बढ़ुची सही हार रे जनसंख्या बढ़िया फल रे आमे कोन करूचे एमान को नियुक्ति दे पारु नाही तेनो प्लान ने रखा गला 7th 8th प्लान रे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट आत्मनिर्भरशीलता so निजे how the people of the country will be self employed not depending upon others number 2 रखला wage employment wage हमर गोटे जिंसा देखो wage so in India how much wage is given so wage is different in different areas different localities even if the subsistence wage is given subsistence wage अल्प मजूरी दिया जाउची गोटे भलो स्टोरी टे कहूच अल्प मजूरी पर will you listen the story students
dear students, Okay, sir. what a story कहूची इंडिया रे हमर एजुकेशन लिसन हमें एजुकेशन सेक्टर का आसीबा एजुकेशन सेक्टर कोन होची गोटे लोक पाठ पढ़ला ग्रेजुएशन पढ़ला कि पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ला चाकरी जाई कला चाकरी कला बेलको जेति के दरवा दवा कथा ताको दिया गला नाही मैनेजमेंट जॉइन कला से धर से जोटी गोटे लोक पे 30,000 दरकार आर दैट प्लेस दैट पर्सन एम्प्लॉयड with 2,000 3,000 wage 2,000 3,000 दरा पाई गला धर हमर जो शिक्षा सहायक सिस्टम ता अछि हम भाबु छी बोधे इग्नोर बहुत पिला शिक्षा सहायक थिबे तेणु शिक्षा सहायक कौन चाकरी जो से करुच्ची 4,000 कि 6,000 कि 8,000 टका दौर 6 वर्ष पर पूरा दरमाहा दौर तेणु 6 वर्ष पर्यंत ही इज गेटिंग सबसिस्टेंस वेज से कम कम मजूरी पाउची तेणु कम मजूरी पाइले कौन ही विल नॉट डेवलप he will not take proper care of his job तो दे परिवर्तन से कोची wage employment so subsistence wage should be abolished from the country अल्प मजूरी दिया होची ताकू दूरीभूत करी गोटे लोक जति की मजूरी पाए योग्य सेति ताकू देबा दरकार so planning should be adopted तो planning हवा दरकार land reform कोन कोची भूमि रा पुनर्गठन बा जोतर पुनर्गठन so the person has different acres of land in different areas गोटे मन कर जन भुवनेश्वर रहउछि भुवनेश्वर रहउछि कहत बर्तन के भुवनेश्वर राज्य में कारण भुवनेश्वर जो रेट रे कोरोना व्यापी चलछि लोग भुवनेश्वर सब गाम आइ गेले हां नहीं अरे यस ना नो लोग गाम आइ तरा गोटे गां रे अरे यस ना नो Yes, sir. जो रेट रे कोरोना जो रेट रे कोरोना व्यापी छि भुवनेश्वर सब लोग गाम आइ गेले तेणु धर गोटे गाँ कथा ए पर्सन इन ए विलेज इज an agricultural farmer he has certain lands in different corners of that village गाँ एपटे गाँ सेपटे चारिपट जमी तेणु से चारिपट बेलू तार टाइम लॉस हो जदि तार जमीटा गोटे जगह दिया जाता land reform so by proper plan land reforms will be adopted जो तरह पुनर्गठन बा भूमि रा पुनर्गठन हे पारले हमरा गोटे लोक पाखरे 100 acres of land गोटे लोक रे किछि land नाही the person who has 100 acres of land he will not take proper care of his land and the person who has no land he is interested to cultivate some land जार 100 एकड़ जमी अछि से चाष कर पाने ठीक रे जार जमी नाही से चाष करिया को इंटरेस्टेड तेणु balance करो नाही so land reforms so reformation that means ceiling on land holding जणे लोक सर्वोच्च एति परिमाण जमी रखि परिवार नियम रहबा ताट अधिक परिमाण जमी रखिले government should forcibly take the land from that person who has more acres of land and distribute it to others who has no land at all then proper planning will be adopted understand then training तापर से कुछ ट्रेनिंग दवा ट्रेनिंग माने जे जो काम करिवो से काम ऊपर ता किसी ट्रेनिंग दवा दरकार so if we will give some training to the person he will know the pros and cons of the work culture गोट लोक को हमें ट्रेनिंग दवा जो विषय से काम करिवो जेते पुलिस जर पुलिस जान तो पुलिस ट्रेनिंग देउ तो टीचर जान करिवो तो से ट्रेनिंग दवा दरकार in which way you will take the classes को बाटर तमे क्लास करिवो को बाटर पिला पडले पिला बुझी परिबे हाउ विल क्लैरिफाई द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स ट्रेनिंग दियाजबा दरकार इन्वॉल्वमेंट ऑफ volunteer organization जानछ कोन अछि पिला माने volunteer organization स्टूडेंट्स हेलो organizations NGOs non governmental organizations volunteer organizations those who are working voluntarily for the social work and volunteer organizations should be developed proper management should be implemented in the country then administration of rural areas so rural development rural areas area रे केमिति डेवलप करा जाय परिबो सेटा हबा दरकार so these are adopted in 7th and 8th plan for the country's economic development तनो ए जो जाय पढेले तापर तमर पिलान छोटे चेक इन प्रोग्रेस जोडा क्वेश्चन पढिबो सुना ओडा चेक इन प्रोग्रेस पर बाहर अछि सेतर कहूची ए जो जाय पढाला पर जो क्वेश्चन आछो हेलो
Yes, sir. We are listening. हां क्वेश्चन के पढ़ देखो से कहू छी बतला में जति पढ़ेली से कोन कहबो गोटे क्वेश्चन पढ़ बारी इंपोर्टेंट क्वेश्चन से देई छी बहि रे आ सही क्वेश्चन आसीबो एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोग्रेस ऑफ प्लान्स गोटे क्वेश्चन आसीबो लॉन्ग क्वेश्चन रे एक्सप्लेन ब्रीफली द प्रोग्रेस ऑफ प्लान ता केमिति डेवलप करा बुझाला तेणु केमिति प्लान ता डेवलप कला आमे 1950 मसिया ठू आसिले 1951 मसिया रे फास्ट फाइव प्लान हला ये जो प्लान उडाक अप टू 2012 मु आस्ति को जाय 7th प्लान 8th प्लान तापर से कहूची तार प्लान उडाक आसिलो 12th प्लान हमर हला 2012 रु 2017 11th फाइव प्लान हला 2007 रु 2012 तेणु ये सब जाक प्लान को हमें लिखवा दरकार ये जो पॉइंट मु कहली ए पॉइंट दिगा लिखियो सर बुझले an important question what they say that is prospective planning or progressive planning how plans in India are progressed भारत वर्ष रे प्लान उडा केमिति प्रोग्रेस करछि ओडा क्वेश्चन आसबो इंपोर्टेंट क्वेश्चन तापर से कहूछि एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल एल जो कहथिल प्लानिंग कमीशन और नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल कोन So National Development Council will implement the plans which will be adopted by the Planning Commission. Then Planning Commission जो plan ता तैयारी करिवो NDC National Development Council से plan ता को adopt करिया पे steps will be taken by NDC to implement the plans in the country. तापरे आउट क्वेश्चन आसीबो शॉर्ट क्वेश्चन आसपारे बा छोटिया क्वेश्चन आसीबो annual plans बुझो जे annual plan कोन के कहि परिबो annual plan कोन who can say Hello. Who can say annual? Sir. Annual plan. Tell me Sir. annual plan. Annual plan कौन कहो? पहले कहले. Annual plan means. Yes. Annual plan. भारत वर्ष रे 5 वर्ष पई अवधि 5 वर्ष पई जो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में काम करा जाते हैं Yes. 1st April to 1951 to 1956 Yes. to 1961 1966 Annual समय को एनुअल प्लान हां एनुअल प्लान हला भारत वर्ष रे प्लान रो अवधि होची 5 वर्ष 5 जते बेले 5 वर्ष पे प्लान तैयारी करा जाय पारे नाही प्रति वर्ष प्लान तैयारी करा जाय ता को जाय एनुअल प्लान ओके बुझला सर वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन ए जो क्वेश्चन कहले एबा तमर ए क्वेश्चन पढियो बोले से तार सिलेबस रे देछि बुझला सर ए दीज आर द क्वेश्चन मन रहला 5 year plans NDC planning commission and annual plan ए यूनिट रो ए चैप्टर रो एति क्वेश्चन सेकंड पार्ट को आसी जा प्लानिंग स्कीम्स सर एबे पर्यंत केतेटा एनुअल प्लान कराई सर हेलो केवल 3टा मात्र सर एबे पर्यंत 3टा मात्र एनुअल प्लान कराई छै ना केतेटा एनुअल प्लान तापर मझिरा ओड कराइतला ओड प्लान हॉलिडे हेतला ड्राफ्ट ऑफ प्लान हेतला ड्राफ्ट ऑफ प्लान ओड हम जाओ से से जीपीसी बुझल नै किंतु जनरली 3टा एनुअल प्लान हेतला ओके ओके सर मतलब क्वेश्चन मन रहला मु तुम सब पठे देबी व्हाट्सएप ग्रुप रे तार सब पॉइंट लिखि पठे देबी तापर हम बतन सेकंड यूनिट 2 प्लानिंग रो सेकंड चैप्टर बुझबा प्लान का सेकंड पेज बुझबा दैट इज प्लान स्कीम्स सो प्लानिंग पे कोन कोन स्कीम अडॉप्ट कराई छी तनो जनरली प्लान पे 3टा स्कीम अडॉप्ट कराउछी बुझला सो जनरली 3 schemes will be adopted for planning what are these 3 schemes so these 3 schemes are number 1 central scheme number 2 central sponsor scheme number 3 state sector schemes understand 3 schemes are adopted for the plan scheme is a plan scheme boli कहू what is that plan scheme means the schemes which are adopted for implementation of plans is known as plan scheme so the plan scheme is divided into 3 parts number 1 central scheme number 2 central sponsor scheme number 3 state sector schemes so what are these schemes ए तीनटा scheme कोन है मतलब so central scheme
आमे बर्तन मु टिके कहू तमरा पॉलिटिक्स जवन थिले पॉलिटिक्स कहउतले से बुझ परथुए सो इंडिया रे 3 टायर स्ट्रक्चर अछि 3 टायर स्ट्रक्चर माने सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जोठी हमर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री स्टेट गवर्नमेंट जोठी चीफ मिनिस्टर ऑफ द कंट्री लोकल गवर्नमेंट आइदर मेयर और चेयरमैन और सरपंच इज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ए तीनटा गवर्नमेंट अछि तो से तीनटा स्कीम रे कहू हम कोन सेंट्रल स्कीम व्हाट इज दैट सेंट्रल स्कीम सो सेंट्रल स्कीम मींस where the developmental work or infrastructural works are occurred by the central government, purely central government, fully by the central government is known as central scheme. Understand? बुझला? ଆଜ୍ଞା sir सेंट्रल स्कीम कोना जोठी डेवलपमेंटल वर्क टा सेंट्रल गवर्नमेंट हम माने केंद्र सरकार जोठी करिवे कंप्लीटली डेवलपमेंट वर्क टा सेटा को जाय सेंट्रल स्कीम number 2 central sponsored scheme central sponsored scheme कोन कहूची central sponsored central government will sponsor the money but state government will implement the plan understand central government पैसा ना दबो प्लान टा इंप्लीमेंट करियो के इंप्लीमेंट करियो स्टेट गवर्नमेंट एटा को जाय सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देला 50% देला कि 75% देला सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा ना दबो स्टेट गवर्नमेंट एटा को इंप्लीमेंट करबो अंडरस्टैंड बुझियाला yes yes Yes, sir. थर्ड पॉइंट हला स्टेट सेक्टर स्कीम्स दैट मींस कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट विल डू द डेवलपमेंट वर्क टा कंप्लीटली स्टेट गवर्नमेंट करियो प्रथम टा हला सेंट्रल गवर्नमेंट डेवलपमेंट वर्क करियो पैसा तार काम तार तदारख तार इंप्लीमेंटेशन तार असेसमेंट तार टारगेट तार सेकंड हला सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा दबो कामर गतिविधि केमिति काम हैला भलो काम होला खराब काम होला कामडा के दिन गला एटा स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करबो थर्ड हला स्टेट गवर्नमेंट पैसा स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करबो तनो ए तीनटा होची प्लान स्कीम व्हिच आर अडॉप्टेड इन आवर कंट्री तनो ए तीनटा प्लान स्कीम में हम देश रे अडॉप्ट कराई जो तरीके हमर प्लान स्कीम and plan scheme hela 3 plan schemes are there so how the rural development will occur our main topic hala kano rural development so what is that rural development means so the different areas of the country is categorized into two heads one is urban sector another is rural sector urban sector where the areas are developed is known as urban sector rural sector remote areas gramanchal गोटेला शहरांचल गोटेला ग्रामांचल तनो प्लान स्कीम टा ग्रामांचल पे को वे रहउची त पढितला आर पेपर रे यूनिट 1 रे काले सार पढैतले तमरो पॉवर्टी पढुतले सरकारी पढुतले डीपी पटनायक सर मध्ये पढुतले पॉवर्टी से पढुतले कोन आईआरडीपी इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जेआरवाई जवाहर रोजगार योजना पीएमजीएसवाई प्राइम मिनिस्टर ग्राम्य सड़क योजना एनआरईजीए महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट DDP so these are the different functions these are different rural development programs adopted in our country by the plan scheme ए जो IRD पहला integrated rural development program so most of the people of India are residing in the remote areas most of the people of our country are residing in the rural areas भारत वर्षर अधिकांश लोक रूरल एरिया रे बसवास करथि रिमोट एरिया बसवास करथि सो दे आर बेसिकली द पुअर पीपल their standard of living is very low samanakar standard of living low they are poor people they are not able to work throughout the year disguised unemployment occurs in rural areas so government takes some drastic step to implement these programs IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम समन्वित ग्राम्य विकास कार्यक्रम बा समन्वित ग्राम्य विकास योजना ग्रामांचल रे हाउ द रूरल सेक्टर विल डेवलप सो दीज आर द प्लान्स तापर हमर योजना प्रधानमंत्री सड़क योजना ए योजना जा फल कि हमर इकोनॉमी डेवलपमेंट करे पारुची सो दीज आर द हेलो सर यस सर रूरल एरिया और रिमोट एरिया भीतर डिफरेंस कौन सर
रूरल एरिया जहाँ रिमोट एरिया ताहा ए जो रिमोट एरिया को रूरल एरिया को रिमोट एरिया बोली कह जाए अनुन्नत अंचल को रूरल एरिया बोली कह जाए ओके आज्ञा सर there is no difference these are the alternative names rural area ओके ओके or remote areas ओके सर okay thank you very much then so this rural development will under the plan scheme এই পার্টটা ये ଗୋଟେ চ্যাপ্টার রাখি দেলা से फास्ट गोटे चैप्टर जो चैप्टर 2 टार प्रथम गोटे कहली तापर सेकंड रे आसला प्लान स्कीम रे क्वेश्चन से कोन कहूची व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड स्टेट स्कीम दिस इज वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो कहली से गोटे क्वेश्चन आसीबो सेंट्रल स्कीम सेंट्रल आमे प्लान स्कीम ना कोन कहै छै तीन बार व्यक्त करछि सेंट्रल स्पॉन्सर और स्टेट स्कीम तेणु से पचार व्हाट इज दैट इंपोर्टेंट क्वेश्चन से देछि क्वेश्चन बारे कोन कोन तमर परीक्षा रे आसीबो व्हाट आर द क्वेश्चंस विल कम इन योर एग्जामिनेशन दीज आर द क्वेश्चंस व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम एंड स्टेट स्कीम कोन डिफरेंस ए जो तीनटा कहले से तीनटा कहउचे डिफरेंस गोटे होचे सेंट्रल स्पॉन्सर्ड गोटे सेंट्रल गवर्नमेंट तयार करबो गोटे होचे स्टेट गवर्नमेंट तयार करबो और स्टेट गवर्नमेंट दबो ओके सो वी विल कम टू द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ दिस प्लानिंग प्लानिंग ऑफ 4-5 व्यक्त कर प्रथम कहितली नेक्स्ट चैप्टर जो कोन machineries for planning in the national level machineries of planning that how the planning will be adopted in the country इधर में जण के कहउतले पॉलिटिक्स रा छथि बोली पॉलिटिक्स रे के पीजी करतले कहउतले हेलो 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 हां या कोन जण कहउतले पॉलिटिकल साइंस रे पीजी करतले बोली कहउतले हां हां मो करतले इधर ए मेसेज ऑफ प्लानिंग रे वी विल डिस्कस सम आर्टिकल्स को आर्टिकल ले कोन काम होचे सेटा से कहउची इंपोर्टेंट आर्टिकल्स फॉर रूरल डेवलपमेंट सो इंडियन गवर्नमेंट implemented some articles for the rural development that is machinery of planning of the national level तनो कोन कोन आर्टिकल से रखुची आर्टिकल 38 39 40 41 43 46 then 47 48 49 these are the articles for the rural development of the country these are the machinery for planning machinery से कोन कहउची articles तनो कोन आर्टिकल को आर्टिकल which article is what for the economic development of the country ए economic development पे को आर्टिकल टा कोन हमें देखियो सुना तर से कहउची 38 आर्टिकल कोन कहउची प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ द पीपल आर्टिकल 38 means promoting welfare of the people how the people of the country will get welfare जनमंगल गोटे देशर सरकार होचंती कोन welfare state welfare country का कहउचे where people are getting sufficient food clothes and shelter is known as welfare state and the government will call as welfare government so 38 article ले कहउची promoting welfare of the people how the rural people ग्रामांचल लोक मानकर किपरि भाव रे उन्नति हे परिबो से माने भोको पास के रहिबेनी सेति पे हमें 38 आर्टिकल टा दे अछि किंतु हमर प्रॉब्लम कोन होछि अच्छा गोटे स्टोरी आउट कहउछि लिसन मी गोटे स्टोरी कहउछि काहे कि ए जे प्रथम रो कहउतली हमर लोक माने कोन कहउछथि हमको रेशन कार्ड दे दियो तापला हमें किछि काम करिबोनी वी विल डूइंग नथिंग बर्तन लोग कोन करूछथि पता गोटे कथा कहू ए जो मागेणा खाइबा को दिया होछि ता गोटे कंट्री डेवलपमेंट हबो ना डेवलपमेंट हबो नै I have one sir. गोटे माहालिया जो खाइबा दिया होछि माहालिया पैसा दिया होछि चावल दिया होछि या पर गोटे कंट्री डेवलपमेंट हबो ना नै सर जदी डेजर्ट पीपल को दिया जाए ताले डेवलप होबो सर डेवलप होता ठीक लोग दिया मु आ गोटे स्टोरी कहउछ तो गोटे जंगल गोटे सिंह थिला ओके a lion was in the jungle से lion रो जोड़े छुआ हला lion रो सिंह रो जोड़े सिंह छुआ जोड़ा गुरु गोटे जंगल ले रही गला मा पाखरे आ गोटे फॉरेस्ट अफसर धरि गोटे जंगल गोटे स्टोरी रे मु कहूची गोटे जंगल ले गोटे सिंह थिला सिंह रो जोड़े छुआ हला गोटे छुआ जंगल ले रही गला आ गोटे छुआ जोड़े फॉरेस्ट अफसर धरि पड़े
फॉरेस्ट ऑफिसर जो छुआटा को आनिले ताऊ कौन कले ताऊ गोटे जनता भीतर रखिले इन ए केज ताऊ खाया देले कोन भात डाली तरकारी जा खाया देले किंतु जंगल जोटा रहिला सिंहटा सी केमती खाइला याकू केमती खाया दिया याकू फॉरेस्ट ऑफिसर निजे आनिले हाथ रे खाया देले निजे से परिश्रम कर खाई पारला नहीं किंतु जंगल जोटा रहिला से तार मां संगे बुली की शिकार करबा सिखिला A lion will be a full adult lion after 2 years. 2 वर्ष पर गोटे सिंहटे संपूर्ण पूर्ण वयस सिंह हो 2 वर्ष पर देखा गला सिंह गोटे जंतु जे केवल हाथी शिकार कर परिबो 2 वर्ष पर देखा गला जंगल जे अछि से हाथी की देखले शिकार कर धाइला किंतु जे फॉरेस्ट ऑफिसर पाकर थिला ताकू छाड़ देला से मालिक चारपटे कुकुर भलिया बुल्ला तेणु एथुर कौन शिक्षा हम पाउचे we got the lesson that if we'll do the work and consume then country will develop हमको मागेना खाइबा दिया गले हमें डेवलप करि परिबा नाही कारण हमें सबले चाहिबा मागेना खाइबा जा फल रे if we go to the remote areas तमे गां को जिबो देखिबो जार गां रे बड़ पिंडी थिबो सेठी 10 12 पिला बसले तास बने 29 ब्रिज मागण ए सब तास खेल चले दे आर डूइंग नथिंग किछि काम करले दे आर डिस्गाइज ऑन अनएम्प्लॉयड माळ्या मुर्ची खाइबो माळ्या चावल माळ्या किरोसिन माळ्या तेल वार्धक्य भत्ता तण जो अन बेकार भत्ता ए सब मिलुची तण ए जो नउचंती लोक दिया होची से जो एले जो जे जण कहला हमर जे प्रॉपर वेयर जे दिया पारंता ताले डेवलप हे पारंता किंतु द पर्सन हु हैज मनी ही इज गेटिंग रेशन कार्ड तेणु एठी एटा है पर नहीं तो से 38 आर्टिकल कहउची प्रमोटिंग वेलफेयर ऑफ द पीपल सो a welfare government will promote the welfare of the rural people how the rural people will achieve welfare a rural people माने welfare केमिते achieve कर परबे that is the main point 39 आर्टिकल कहउची कोन adequate means of livelihood बंचिवार सर्वनिम्न मौलिक अधिकार तेणु एबडा दिया होची बंचिवार सर्वनिम्न मौलिक अधिकार दिया जाए पारिबो 39 आर्टिकल कहउची 40 कहउची कोन आर्टिकल 40 मन 38 39 40 41 43 46 47 48 49 these articles are necessary for planning in economic development in national level प्लानिंग रो अडॉप्शन जातीय स्तर रे एई आर्टिकल ओडा जगु अधिकाई परछि एवं गोटे देश पूर्ण देश रे कोन दे परछि तो से कोन कहउची 39 आर्टिकल adequate means of livelihood आर्टिकल 40 ऑर्गेनाइज्ड विलेज पंचायत ग्राम पंचायत सब तैयारी करी कि पंचायत स्तर रे सेक्टराइजेशन तेणु सेक्टर विभिन्न भाग कर दे कि वार्ड सब वार्ड रो गरीब लोक मानकर डेवलप करिया हला प्लानिंग रो मुख्य लक्ष्य जोडा कि 40 आर्टिकल जाला ऑर्गेनाइज्ड विलेज पंचायत तापर कोन कहउची 41 राइट टू वर्क राइट टू एजुकेशन 41 आर्टिकल कोन कहउची राइट टू वर्क मो पाठ पढिची बा पाठ पढिनी बट इट इज माय ड्यूटी इट इज द गवर्नमेंट्स ड्यूटी एंड रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोवाइड मी 100 डेज वर्क जोडा कि ईएएस ओटे योजना भारत सरकार अछि ईएएस योजना बताओ कहै छै एम्प्लॉयमेंट assurance scheme under this employment assurance scheme a person will get 100 days work if the person will not get 100 days work this is the duty and responsibility of the government to provide 100 days work to that person मु अति कम रे 100 दिन काम करबा दरकार 100 दिन काम न पाई परछे एटा सरकारंकर कर्तव्य एवं ड्यूटी मते 100 दिन काम दरकार सेति गां रे पोखरी लोक मान द्वारा खोला होची रास्ता लोक मान द्वारा तैयारी करा होची पेशा लोक मान काम दवा पे तेणु एटा हला 41 राइट टू वर्क काम करिवार अधिकार राइट टू एजुकेशन पाठ पढिवार मौलिक अधिकार समस्त अछि राइट टू एजुकेशन सेति पई 6 रु 14 वर्ष जुलाई 5 वर्ष प्रथम श्रेणी 14 वर्ष 6 रु 14 वर्ष पर्यंत पिला माने महालिया पाठ पढिबे गवर्नमेंट विल बियर all the cost of education of the students with a midday meal समान गोटे midday meal दोची एबे midday meal पारे आउरी कोन दोची आउरी साइकिल दोची तापरे बही पत्र दवा पे मते योजना करछि तो से एडाला राइट टू एजुकेशन that means the child who will born in the nation he has every right to get education
गोटे पिला गोटे छुआ जन्म हेले तार संपूर्ण रूपे अधिकार अछि शिक्षा पाइबा पई एवं से शिक्षा पाई परछि तापर से कोन कहउछि राइट टू वर्क राइट टू एजुकेशन 43 कहउछि सिक्योरिंग ए लिविंग वेज सिक्योरिंग ए लिविंग वेज बंचिया पे जति मजूरी दरकार से मजूरीटा पाइबा दरकार तापर 46 आर्टिकल कहउछि एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेक्ट ऑफ द वीकर सेक्शन एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द वीकर सेक्शन समाज रे जो माने वीकर सेक्शन दले होचंदी धनी श्रेणी दले मध्यम श्रेणी दले होचंदी वीकर सेक्शन द पीपल आर कैटेगराइज्ड डिफरेंट हेड्स हायर क्लास उच्च तापरे मध्यवित्त तापरे निम्न मध्यवित्त रो हम पुनी भाग कर दोचे उच्च मध्यवित्त मध्य मध्यवित्त निम्न मध्यवित्त मिडिल क्लास पीपल जो कहउछ हमें एटा मध्ये भाग कर दोचे तो से कहउछ जे एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द वीकर सेक्शन जो माने देश रे अवहेलित जो माने देश रे तलितलित अवस्था रे द पर्सन्स हु आर डिप्रेस्ड पीपल इन द कंट्री who are the depressed class the people how the economic development of these people will occur in the country that is the main motto of this 46 article ei article la eta diaichi 47 article le कहउछि relate to standard of living बंचिबार किमि जाय बंच स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बंचिबार मौलिक अधिकार पिला माने नगड़ा बेले ओटे जागा सुनिथिबो 5 वर्ष तळे हेलो आज्ञा सर सुनिछु नगड़ा बेले सुनिथिबो नगड़ा रे कोन हेतला जे 123 टा पिला छोट छोटा शिशु इन्फेंट 123 infants were facing death due to malnutrition सुषम खाद्यर अभाव जोगु 123 टा शिशु मर जायतिले मरियल गाय पे तो सेठी शिशु मान पे खाद्य जो दरकार से खाद्यटा दिया पारला तेणु वर्तमान गोटे देखु तो एडवर्टाइज देखु तो कुपोषण भारत चार्ट कि एडवर्टाइज करछि कहि पारे पिला माने हेलो कुपोषण भारत चार्ट यू माइट हैव नो आमिर खान पिला नो आमिर खान हेलो Yes, sir. आमिर खान को जानछ आमिर खान एडवर्टाइज करछथि कुपोषण भारत चार्ट ता माने गोटे पिला जन्म पूर्व जतले व्हेन दैट infant is in mother's womb from that date take proper care of the infant गोटे शिशु जतले मार पेटर रहउची सेही दिनटू तार समस्त जतन नबा दरकार सेटा को जे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग तेनो ओडिसा सरकार कोन गले नगड़ा रे खाद्य विभिन्न ताकर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से बहुत योजना करथिले तो जोटा कि 47 आर्टिकल ले कहउची गोटे नगड़ा गोटे गरीब गां थिला जब ताको प्रॉपर प्लान द्वारा तो डेवलप करला को आर्टिकल 47 article जोटा कहउची relates to standard of living that means the standard of living of the people of the country should increase and when the standard of living of the people of the country will increase country will attain economic development and proper plan will adopt in the country for economic development of the people suppressed class depressed class people of the country तापर 48 article ला कोन कहउची to organize agriculture and animal husbandry to organize agriculture organize that means we know that pratham mu kahithile India is an agricultural country most of the people of India are depending upon agriculture but agriculture is at very low stage the production from agriculture is very low due to low production of agriculture so article 48 provides agriculture development and animal husbandry development that means saro fertilizer su कहउचे बियाना pesticides so beyond se kono कहउची HYVS high yielding variety seeds that means the seeds which will be given to the people are high yielding अधिक अमलक्षम बियान जोगा दरकार पेस्टिसाइड्स जदि गछरे पोक लागि गले त कीटनाशक औषध फर्टिलाइजर्स सार तने एगुडी को दिया गले बडे कंट्री विल अटेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सो 48 आर्टिकल 49 आर्टिकल कोन कहउची प्रोटेक्शन टू द एनवायरनमेंट परिवेश प्रदूषण होची जो एनवायरनमेंट पोल्यूशन होची 49 आर्टिकल प्रोवाइड्स दैट टू चेक द एनवायरनमेंट पोल्यूशन को कंट्रोल करबा दरकार दीज आर द मेशनरी दैट मींस दीज मेशनरी फॉर नेशनल प्लानिंग कोन हला जो आर्टिकल दिया रहला दीज आर्टिकल्स आर द मेशनरीज फॉर द 5 year plans
for the improvement of the rural sector improvement पे ए प्लान उडकर आवश्यकता रहला तापर नेक्स्ट कोन कहउची मेसनरी फॉर प्लानिंग एट द स्टेट लेवल ले प्लानिंग कोन हो एडा नेशनल लेवल ले सो दीज आर द आर्टिकल 38 टू आर्टिकल 47 49 बजे गोट आर्टिकल छडी के 38 39 40 41 42 9 43 46 47 48 49 these are the machineries of the nation for the rural development of the rural sector of the country state level state कोन करछि planning development तनो state plan कोन करछि how to develop एटाला central government state रे कोन आसे to implement 5-year plans that means the plan which will be adopted by the planning commission approved by the NDC and government will approve the plan that plan how to improve the 5-year plan how to implement the 5-year plan that is the basic duty of the states then annual plans जो annual plan हला प्रति वर्ष सही प्लान को नै कि नुवा प्लान तयार करबा annual plan करबाटा को वजह ए जो स्टेट रा machinery monitoring the plans monitoring माने प्लान टा में तयार करते प्लान टा हेला ना नै प्लान टा प्रॉपर वे रे हेई पर जनै एटा को इम्प्लीमेंट करे पे जे इम्प्लीमेंट करे दैट इज मॉनिटरिंग द प्लान दैट मींस प्लान विल बी मॉनिटर्ड देन तापर कहउची इवैल्यूएशन प्रोग्राम आफ्टर मॉनिटरिंग द प्लान इवैल्यूएशन हमें तार इवैल्यूएशन मींस असेसमेंट मींस प्रोग्रेस ऑफ द प्लान टा केते प्रोग्रेस करछि प्लान टा ठीक रे प्रोग्रेस करछ नै सो असेसमेंट ऑफ द प्लान एंड प्रोग्रेस ऑफ द प्लान्स so this is known as master of the planning of the state government so there is a state planning board ता बाद कोन है state गोटे state planning board करछि जो तरह की अछंती मिनिस्टर्स एक्सपर्ट्स नॉन ऑफिशियल्स एंड ऑफिशियल स्टेट रोड प्लानिंग बोर्ड अछि जो तरह मिनिस्टर जन मंत्री अछन जो तरह एवं कैबिनेट मीटिंग जोटा होछि तापरे एक्सपर्ट मींस इकोनॉमिस्ट एग्रीकल्चरिस्ट्स डॉक्टर्स इंजीनियर्स who are implement the plans को माने planning agency रहउछथि planning agency executive engineer of PWD irrigation public health engineers engineering department state electricity board district education officer तापरे chief medical officer health officer so these are the members of the planning commission that means whether proper plan will implement or not ए जुटा पढ़ले यार चेक लिस्ट कोन करे यार क्वेश्चन कोन आस पारे व्हाट इज द क्वेश्चन व्हाट आर द respective roles of the planning commission in the central ministry state planning depending on the formulation of plans plan तयारी करा पे सेंटर रा नेशनल प्लानिंग machinery कोन स्टेट प्लानिंग machinery कोन एडो क्वेश्चन आस पारे व्हाट आर द planning machinery of the central government and the state government for the implementation of plan what are the planning machinery so planning machinery रहला सेंट्रल गवर्नमेंट रा आर्टिकल्स स्टेट गवर्नमेंट रा ए जुते कहली these are the planning machinery for implement the plan for the economic development of the country of the state how the state will attain economic development okay students okay तण हमें कोन पढिले पर्यंत बुझि होछ पिलाने बुझियाला हेलो नो सर बुझियाला तण कोन पढिले हमें पर्यंत जते पढिले सब से कुछ कोन पढिले so we are discussing planning what is planning introduction of planning commission national development council functions of planning commission functions of national development council planning scheme of planning planning scheme central sponsored state planning scheme पढ़ले articles machineries of planning in national level and state level scheme हमें पढ़ले ए पर्यंत हमें एती रिसर्च वाले फर्स्ट चैप्टर रे एती के हमरा अछि तापर से कीवर्ड केतरा कहछि ओके some keywords are there कोन so planning is just an aggregation of physical and financial targets तो ए जति गुरा में ले we learn what is it कोन planning टा होछि physical improvement and financial improvement physical improvement means due to proper plan production of the country will increase and when production will increase physical production will increase in the country and when we sell these commodities financial improvement will arise तनु कीवर्ड से कोन कहउछि
कीवर्ड रे कहूची मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल मैक्रो माने एग्रीगेट माइक्रो माने स्मॉल बड़ा अचीवमेंट कोन जो जाय पढिले बड़ा अचीवमेंट हला कोन जे प्लानिंग द्वारा हमर फिजिकल प्रोडक्शन और फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट दीटा का हे पर दिस इज द कीवर्ड अंडरस्टैंड so keyword of the chapter planning is improvement of the production and financial improvement will occur micro level e kon infrastructural development occurs due to proper plan infrastructure माने भित्ति भूमि रा विकास infrastructure के रहला transport education roads water power these are the infrastructural development of the country so due to plans हमर कोन होची फिजिकल प्रोडक्शन पडिबो फाइनेंशियल इंप्रूवमेंट हबो तापर एटा मैक्रो लेवल माइक्रो लेवल ऑफ के जे ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन हेल्थ एजुकेशन रोड्स वाटर will develop in the country that's why the economic development of the country will occur so this is all about your chapter 2 that is planning so what is planning planning is a panacea which cure all economic ills or which cure all economic disease of the country गोटे देश रे अर्थनैतिक उन्नयन सम्मुख रे जा जा विपद है ताको प्लानिंग द्वारा में abolish कर पारू due to plan we can abolish that this is your chapter 2 planning बुझियो जी okay students Okay, hello sir. Okay, sir. next tense एटा प्लानिंग तमरा चैप्टर 2 टा सरी गला एटा को रेफरेंस में तुम कहूची को रेफरेंस तमे तो इग्नोर बाय रेफर करूछ बुझल नै हेलो हेलो Again, sir. Again, sir. प्लानिंग टा बर्तन एटा चैप्टर सरी गला नो चैप्टर कोन कोन बाय फॉलो करिवो ए जो कहली इग्नोर बाय फॉलो करिवो प्लस सजेस्टेड रीडिंग्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1952 रो द फर्स्ट 5 ईयर प्लान टा फॉलो करिवो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रो 1970 फोर्थ 5 ईयर प्लान एंड प्लानिंग कमिशन रो ताको फॉलो करिवो तापरे सरकारिया कमिशन 1988 कमिशन ऑन सेंट्रल स्टेट रिलेशन then 19 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द कमिशन ऑफ इंडिया ए जे फॉलो करिवो मु सब जा पॉइंट रा लिखि की अच्छा समस्त व्हाट्सएप रे मेंबर अच्छा आगे सर Again, sir. Again, sir. ए जो व्हाट्सएप ग्रुप रे है छी इग्नो आरसी कोड कोन लिखा है छी से तो समस्त में ऑल आर यू ऑल द मेंबर्स ऑफ दैट व्हाट्सएप ग्रुप yes we are all so this I covered today I will just take the photo of this take the photo and send it in WhatsApp group पढ़ दे एडा ला chapter 2 सरी गला any doubt from students please any doubt from your side किसी डाउट अछि कि हेलो हेलो जदि डाउट पचार तले हमर मते क्लास अलर्ट है छी आज 21 24th 2 रु 4 27th 2 रु 4 और 30 ये चारटा के 8 घंटा क्लास रे आई विल फिनिश ऑल द ओके हेलो हेलो Hello, sir. I will adopted four classes. I have been assigned 4 classes. Okay. Yeah, okay, sir. 21st. Today is over. After clarifying your doubts, then next class 24th 2 to 4 p.m. Then 27 2 to 4 p.m. Then 30 2 to 4 p.m. So if you have any doubt regarding the planning commission, National Development Council and all the machineries, kindly ask me any question from your side if you want to. Are you understand my points? पिलावन सब जो मैंने अच्छा समझ तो बुझी पार लगी सब बुझी पालो, sir. ना स्पीड पढ़ाई जाऊँ सर Sir, बुझी होची. बुझो तो sir Okay. can you explain again about national development council नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ओके नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल से कहूची जे गोटे प्लानिंग कमिशन जो 1950 रे हैला प्लानिंग कमिशन संगे से प्लानिंग कमिशन जो प्लान ता तयारी करिवो
National Development Council ताको implement करिवार भूमिका नब. So the role of NDC National Development Council is to implement the plan which is adopted by the Planning Commission. The plan which will be created by the Planning Commission, decided by the Planning Commission, the NDC will implement that plan. Okay. Thank you, sir. Okay. Thank you. Thank you. Okay. Any question? Any question? After sum up कर देवी total टा. Listen Yes, me. sir. Yes, it is better. After briefly कह देवी. Yes, sir. ठीक अछि. मु briefly update कह दोची. से कहूची हमारा planning टा कौन? Planning is a panacea to cure all economic diseases. So in India, when India got her independence, there was no planning at all. Planning is nothing. So India was completely in poor states. So without adoption of planning, it is not possible to attain economic development. तापर दी भाग से कर दोची ओटे rural area ओटे urban area. Generally, the people who are residing in rural areas or remote areas, they are generally poor. They are not getting any job facilities. So planning is implemented for the country's economic development. कौन पे planning टा होची? Number one, attainment of higher rate of economic growth. Economic growth रे अधिक achieve करिया पे. Reduction of economic inequalities, achieving full employment, attaining economic self-reliance, modernization of agriculture and industry, then removing imbalance in the economy. Modernization of agriculture. Modernization of agriculture कौन से कहूची? Modernization of agriculture. India is an agricultural country. 52.8% people are depending on agriculture, but production is only 27%. That means the contribution of agriculture to the national income is only just 27%. So India is an underdeveloped country. That means a vast number of population is depending on agriculture, but production is very low from agriculture. That's why India is an underdeveloped country. Then planning karala agriculture development. So agriculture sector is overcrowded. 10 लोग जोड़ी दरकार है 15 लोग काम करछथि. These are known as disguised unemployment. So एमान को कौन कला एमान पे ओटे industrial sector will develop in the country. How the industrial sector will develop in the country? Industrial sector टा केमिति develop हे पारे. एटा कराला तापर imbalance हमर जो export import agriculture industry तापर को foreign trade domestic trade ए भीतर जो problem वाला imbalance रहउची ता केमिति balance करबे के करबो planning commission करबो. तो प्लानिंग कमिशन केबे आइतला मार्च 1950 रे प्लानिंग कमिशन तेरेला कोन पे टू इंप्लीमेंट द प्लान्स. ए प्लानिंग कमिशन को जोडा तेरेला एटा कंट्रोल करे गला एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल केबे आइला एटा 6 अगस्त 1952 6 अगस्त 1952 मसिया रे ए एनडीसी टा तेरेला. That means what will be decided by the planning commission, that will be implemented by this NDC. तेणु ए प्लानिंग कमिशन कौन होची? प्लानिंग कमिशन कंपोजिशन ऑफ प्लानिंग कमिशन का नहीं प्लानिंग कमिशन तैयारी होची. प्लानिंग कमिशन इज कंपोज्ड ऑफ 8 members. Number 1, Prime Minister, who is the chairman of planning commission. Then 4 full-time persons. Among them, one is deputy chairman. Then 3 ministers. Which are the 3 ministers? Minister of Planning, Minister of Finance, and Minister of Defense. They are the member. So planning commission composed of 8 members. 8 जन को लेके planning commission हला. तापर से कहूची गण planning तनो planning टा हला के बे इंडिया रे planning एक्ट होला 1951 1st April 1951. The duration of the planning in India is 5 years. So when it is 5 years, 1951 to 1956, 1956 to 1961, 1961 to 1966, 67, 68, 69, 3 annual plans. That means government was not in a suitable position to implement the 5-year plans. So 3 annual plans had been implemented in these 3 years. Then tapar plan asla 5th 5-year plan asla 1974 to 79, 4th 5-year plan asla 1969 to 74 to 79 asla 5th 5-year plan, 6th 5-year plan asla 1980 to 85, 7th 5-year plan 85 to 90, 8th 5-year plan 90 to 95.
ତେଣୁ ଏ 7 ଆଉ 8 5 plan ରେ କ'ଣ ହେଲା, some policies are implemented how to improve the rural sector of the country, how to the rural sector of the country will improve, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କେମିତି ଉନ୍ନତି କରାଯାଇ ପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଗଲା ଏଥିରେ ଏ 7 8 plan ଗୁଡାକରେ ରଖାଗଲା self employment, wage employment, land reform, training, involvement of voluntary organization, NGOs, non-governmental organization or voluntary organizations are involved with the economic development of the country. Then technology, how to adopt proper technology in the country. Then management, proper management. Then rural development, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା କରାଗଲା। ତେଣୁ ୟାକୁ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ହେଲା, ବଜେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ ଅଫ ବଜେଟ୍। ବଜେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, budget means the annual income and expenditure of the country is called budget। ଗୋଟେ ଦେଶର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଏବଂ ବ୍ୟୟ ବିବରଣୀ କୁ ବଜେଟ୍ କୁହାଗଲା। ତେଣୁ ଏଗୁଡାକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ଲାନ୍ ଟାକୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ର ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଗଲା। ଏ ବର୍ଷ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଘୁଚିଗଲା, 100 ବର୍ଷ ଆମର ବଜେଟ୍ କେବେଠୁ ଥିଲା, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କେବେଠୁ କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଟେଲ୍ ମି, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର ଟା କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ, କେବେ ଏଣ୍ଡ, କିଏ କହିପାରିବ? ସେଇ 1 ଏପ୍ରିଲ, 1 ଏପ୍ରିଲ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଏଣ୍ଡ ହବ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ। କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟା ଘୁଚିଗଲା, ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ? ହ୍ୟାଲୋ, ଏ ବର୍ଷ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ, এই ବର୍ଷ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର ଟା ଘୁଚିଗଲା, ଜାଣିଛ? ଜାଣିନୁ ସାର୍। ହଁ, କରୋନା ପାଇଁ ଆମର ଜେନେରାଲି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର ଟା ହଉଛି 1 ଏପ୍ରିଲ ରୁ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ। ବର୍ଷେ ଏପ୍ରିଲ 1 ରୁ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ, ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ରେ ସରିଯିବ। ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ ହେଲା, ଡ୍ୟୁ ଟୁ କରୋନା ଦି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର ହାଜ ନଟ୍ ବିନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ, ସୋ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର ଇଜ ଶିଫ୍ଟେଡ ଟୁ ଜୁଲାଇ 1, 1 ଜୁଲାଇ କେ ବର୍ଷ ଘୁଚିଗଲା। କାରଣ ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି ଇକୋନୋମି ପୁରା ସେ କ'ଣ କହୁଛି, ତେଣୁ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟାକୁ ଜୁଲାଇ କି ଘୁଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବୁଝିଗଲା? ସାର୍ ଜୁଲାଇ 1 ରୁ କେତେ ସାର୍? ଜୁଲାଇ 1 ରୁ ଜୁନ 30 ଯାଏ ହବ। ଜୁନ 30 ଯାଏ କରିବେ କି ଆର ବର୍ଷ ସେଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ଯାଏ ରଖିଦେବେ, କାରଣ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଟାକୁ generally the financial started from 1st April ended at 31st March, but due to the great disease, विराट problem जो हला, जो महामारी हला कोरोना, हमर पास हे पालानी, बिल हे पालानी, तो एडा जुलाई को घुचे देले शिफ्टेड, किंतु एंड केबे करिवे सेटा से देई नाथि। ओके ओके, थैंक यू सर। ओके, एंड केबे त प्लान स्कीम है, प्लान स्कीम सेंट्रल स्पॉन्सर और स्टेट जो तरह के आम IRDP, JRY, PMGSY, इंदिरा आवास, प्राइम मिनिस्टर गृह योजना, बिजु पक्का योजना, ये जो इलेक्ट्रिसिटी योजना, ये जिते योजना अच्छे भर सग आसपरे मेसिनरी फॉर प्लानिंग इन द नेशनल लेवल आर्टिकल गुड़ाक आर्टिकल 38 to 49 मझे 42 नहीं 42 नहीं 45 ए दिरा आर्टिकल छाड़ देले 38 कंप्लीटली अछि। तापरे स्टेट लेवल भीतर ला डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल यूनिट, तापरे असला फाइबर प्लान, एक्सपोर्ट, नॉन ऑफिशियल, ऑफिशियल, मिनिस्टर ए माने रहले स्टेट प्लान रे। सो ताबित तो स्टेट प्लान भीतर रहले इंजीनियर्स, को इंजीनियर, पीडब्ल्यू इंजीनियर, इरिगेशन इंजीनियर, पब्लिक हेल्थ ऑफिसर, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर एंड ऑफिसर on health, so even सब जगह इधर रहले। So this is the planning and implementation of plan in a country, एटा chapter 2 रो सब जगह इधर रहला। We have already completed chapter 2 and we have already discussed the questions from chapter 2 also। chapter 2 question आमध्य हमें discussion करले। Any doubt regarding this chapter 2 planning, tell me। कौन doubt रहला planning के ऊपर किसी बात कहो। Hello my dear students, प्लान बुझियाला तो? हेलो हेलो, यस सर, बुझियाला सब? आज्ञा सर। फीडबैक दबा, जति बुझि पारला दबा, बुझि न पारला दबा, केते परसेंट बुझिला दबा, जहां तुमको एग्जैक्ट ठीक कथा दबा सब, बुझला? फीडबैक देले मु नेक्स्ट क्लास दिन टिके कहि दे के पुनी नेक्स्ट चैप्टर यूनिट 3 स्टार्ट कर। ओके, थैंक यू सर। अच्छा आ कोन डाउट अछि पचरा? सर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एजेंसी रे सब कोन काम हो सर? डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग हो छटा स्टेट
स्टेट प्लान माने स्टेट गवर्नमेंट प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट रे ओडिसा रे जते डिस्ट्रिक्ट अछि सब डिस्ट्रिक्ट रे ओटे डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग सेंटर ओटे करछि सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रे तो सेठी डिस्ट्रिक्ट रो प्लान कि दो ओटे अछि तार सब वर्तमान प्लानिंग चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग चेयरमैन जिला योजना बोर्ड अध्यक्ष वर्तमान सब एरिया रे बहुत एमएलए माने सब जिला योजना बोर्ड अध्यक्ष अछंती एटा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग ऑफिस हैला डिस्ट्रिक्ट योजना का प्लान को सियाड हबो डिस्ट्रिक्ट केमिति इंप्लीमेंट हबो एटा करिया पे को रखा अछि ओके डिस्ट्रिक्ट रो काम पे स्टेट रो प्लानिंग ही डिस्ट्रिक्ट रे काम करिवो ना डिस्ट्रिक्ट से सेपरेट प्लान नाही सेपरेट प्लान नो स्टेट जो प्लान हैला जा आसला ताको कोडी सजेशन दबो सजेशन दबो कोडी रोड सर डिस्ट्रिक्ट सर माने से नीचे प्लानिंग तैयारी करि परिबन ना निजे प्लान तैयारी कर परबो कोठी गोटे एठी ए जगह तैयारी हो गोटे हेची एती टंका अलॉटमेंट आछि से अलॉटमेंट को ये ताको डाइवर्ट करी अन्य कोठी काम कर परबो से सब कर परबो नै अल्प जगह कर परबो आज्ञा सर Any other doubts? Any other doubts? Any other doubts? Please tell me. Please ask. No sir, it is clear. Okay. Are you all satisfied? Sir. Are you all satisfied? Satisfied, sir? Yes, sir. Okay. You will give your feedback. Thank you, sir. Okay. Thank you very much. We will meet each other on 24th April at 2 p.m. And I think the students who are not attending this class, tell your friends to attend this class. Okay. तब सांग माने जो माने क्लास अटेंड करि पार ना एटा कमिंग क्लास अटेंड करियो छन कोस आज्ञा सर कहबो सर का तुम्हारा फोन नंबर अच्छे का जे सर ऑनलाइन क्लास करछन्ती इग्नो को मु पूर्ण धन्यवाद दोची फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स इग्नो अरेंज द टाइप ऑफ क्लासेस Thank you, sir. ओके Thank you, sir. Thank you, sir, attending this class. How many blocks you covered, sir? हेलो How many blocks you covered? I have completely covered chapter 2 planning Only chapter 2. chapter 2 कवर हेगला काली चैप्टर 24 चैप्टर 3 कवर करी आपण 2 3 4 5 6 एति के मिनट देछन बोधे नहीं सर आपनकर MRD 103 रे आज्ञा जे 6 ग्रेड आपन MRD 103 केतरा पांचटा ब्लॉक अछि ना सर पांचटा ब्लॉक रो नहीं मते आपण जो देइछन चैप्टर 2 चैप्टर 3 इनते लिखा सर आपन पांचटा ब्लॉक कवर करिवे सर हां आज गोटे ब्लॉक कवर है आपनकर ईच ब्लॉक रे पांचटा यूनिट थिबो एबे मते जो देइछन टोटल सर मु कोन देइछि छाडी दियो ना सर आपन यू टू टीच एंटायर कोर्स आया ठीक है ओके MRD 103 जो कोर्स ता अछि गोटे ब्लॉक एंटायर कोर्स ता पिलो कवर करिवे आज्ञा आज गोटे कवर हे गला पूरा ए जो आपन प्रत्येक दिन गोटे ब्लॉक कवर करंदु सो दैट आपन पांचटा ब्लॉक को 4 दिन रे कवर करे प्लान करंदु हां आज गोटे ब्लॉक कवर हे गला सर आज सर दीटा यूनिट ही पढ़ाई छी संतोष सर आज गोटे ब्लॉक कवर हे गला सर आज्ञा सर आज गोटे ब्लॉक कवर हैला मते जो 5 ब्लॉक देछन्ते आई हैव कवर्ड 1 ब्लॉक टुडे Recording